गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ इंडियाज़ रेमिटेंस लैंडस्केप। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई की रेमिटेंसेस सर्वे रिपोर्ट में रिसेंटली देखा गया है कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं उन्होंने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज़ को ओवरटेक कर लिया है एज टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस टू इंडिया। तो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिख रहा है हमें इंडिया के माइग्रेशन और रेमिटेंस पैटर्न्स में। तो अदरवाइज़ हिस्टोरिकली जो है लो स्किल्ड जो इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स जो जीसीसी कंट्रीज़ में काम करते थे वहाँ से सबसे ज़्यादा हमें रेमिटेंसेज आते थे। लेकिन कोविड की वजह से जो है जॉब लॉसेस हुए, सैलरी कट्स हुए, रिटर्न माइग्रेशन हुआ, फिर कुछ निताकत जैसी जो पॉलिसी सऊदी ने इंट्रोड्यूस की लोकल लेबर को प्रेफरेंस देने के लिए, उसकी वजह से जो है रेमिटेंसेज वहाँ से कम होने लगे। अब धीरे धीरे जो है एडवांस्ड इकोनॉमीज़ जैसे यूएस, यूके, सिंगापुर, कनाडा, वहाँ से जो है हमारे को सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज आ रहे हैं। क्यों क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर बेटर इनकम पोटेंशियल है, हायर मिनिमम वेजेस हैं, स्ट्रॉन्ग करेंसीज हैं, हाई स्किल्ड इंडियन माइग्रेंट्स वहाँ पर जाते हैं और वही सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज अब कर रहे हैं। यूएस की अब जो कुछ हमें फ्यूचर ट्रेंड्स अगर हम देखें तो यूएस की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उससे हमें रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन रिफॉर्म्स देखने उससे हमें रिस्ट्रिक्टिव जो है इमिग्रेशन देखने को मिलेगी। अनसर्टेनिटी की वजह से क्या होगा कि इंडियन जो माइग्रेंट्स हैं वो या तो वापस आ जाएंगे या फिर ज़्यादा पैसा रेमिट करने लगेंगे ताकि लोकल जो है वो इंडिया में वो पैसा वापस भेजने लगेंगे ताकि उन्हें डर रहेगा कि कभी भी वापस जाना पड़ सकता है। एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बढ़ रहा है उससे भी जो है इंडिया में रेमिटेंसेस वो ज़्यादा भेजेंगे माइग्रेंट्स, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उन्हें नहीं पता, उनको फ्यूचर सिक्योर नहीं है उनकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में और उन्हें कभी भी वापस इंडिया आना पड़ सकता है। तो इंडियन स्टूडेंट्स का क्या रोल है वहाँ पर अब्रॉड में? वो अपने एजुकेशन लोन्स देते हैं। जब वो एजुकेशन लोन्स देते हैं तो वो भी ऑफ कोर्स इनकम जो है अपनी आफ्टर ग्रेजुएशन जो है वो एक तरह से इंडिया में भेजते हैं। ओवर क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स जो हैं वो जब लो स्किल जॉब्स में काम करते हैं तो उससे उनका अर्निंग पोटेंशियल रिड्यूस होता है और उनकी रेमिटेंस कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या है कि डोमेस्टिक ट्रेनिंग जो है उसको ग्लोबल जॉब रिक्वायरमेंट्स के साथ आप अलाइन करो, अंडर एम्प्लॉयमेंट को प्रिवेंट करो, डिग्निटी ऑफ लेबर को इंश्योर करने की कोशिश करो, स्ट्रेटजिक माइग्रेशन पार्टनरशिप्स करो कंट्रीज़ के साथ, प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ रेमिटेंसेस करो, उसको जो इंडिया में पैसा आ रहा है उसको ये नहीं कि फ्रीबीज में लगाया, उसको स्ट्रेटजिक आप उसको पैसे को यूज़ करो, प्रोडक्टिव यूज़ करो, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाओ और इकोनॉमी में बूस्ट दो। एक नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स इन नेशनल हाईवेज। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक वुमेन जो है उनकी डेथ हो गई थी और उनके हस्बैंड को क्रिटिकल इंजरीज हुई क्योंकि उनका व्हीकल जो है वो एक डिवाइडर पर क्रैश हुआ था, एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर। तो सीरियस कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स जो हैं वो अभी भी हमारे रोड सेफ्टी को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो सरफेस डिफॉर्मिटीज़ हों या पॉट होल्स हों या ब्रिज कोलैप्सेस हों, ये सब जो है हमारे हाईवेज़ को या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो कई तरह के जो है कैटेगरीज़ में डाला जाता है मेजर जो है हमारे डिफेक्ट्स को, पेवमेंट इश्यूज़, वॉल फेलियर्स, ब्रिज या स्ट्रक्चर डैमेजेस, बाकी की अदर कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस शॉर्टकमिंग्स में। तो 2 ट्रैजिक इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले कुछ महीनों में जिसमें फॉल्टी रोड कंडीशंस को ब्लेम किया गया है, डायरेक्टली लिंक किया गया है लॉस ऑफ लाइफ में। इवन यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे नितिन गडकरी वो भी ओपनली क्रिटिसाइज़ करते हैं सिविल इंजीनियर्स को और कंसल्टेंट्स को कि वो फ्लॉड डिटेल्ड रिपोर्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं और वो कहते हैं कि ये प्राइमरी कल्प्रिट्स यही हैं हमारे इंजीनियर्स और कंसल्टेंट्स इंडिया के हाई रोड फैटेलिटी नंबर्स में। तो इवन उन्होंने राज्यसभा में भी स्टेटमेंट दी कि बहुत से डिफेक्ट्स देखे गए ऑडिट्स जब किए गए एजेंसीज़ द्वारा और पेनल्टीज़ और करेक्टिव एक्शंस भी उनके ऊपर लिए गए हैं जो ऐसे रोड कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर। तो इंडिया का नेशनल हाईवे नेटवर्क जो 91,000 के आसपास किलोमीटर का था 2014 में, वो पिछले 10 साल में लगभग 1.46 लाख किलोमीटर पहुंच चुका है। तो मतलब एक तरह से ऑलमोस्ट जो है 1.5 टाइम्स जो है वो इंडिया में हाईवेज़ की ग्रोथ हुई है। तो रिकरिंग डिफेक्ट्स और पोस्ट कंस्ट्रक्शन लाइबिलिटीज़ जो है वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट को बढ़ा रही हैं और इकोनॉमिक बेनिफिट्स लाने में डिले कर रही हैं। तो क्या चैलेंजेस हैं? पहला तो ये है कि आउटडेटेड या इनकरेक्ट टेक्निकल इनपुट्स का यूज़ किया जाता है डीपीआर बनाने में। कॉन्ट्रैक्टर्स पेनल्टीज़ तो फेस करते हैं लेकिन स्ट्रक्चरल करेक्शंस नहीं की जाती और उसमें सालों साल लग जाते हैं। इंजीनियर्स और साइट सुपरवाइजर्स उनके पास इतनी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ही नहीं है कि वो हाईवे कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स जो हैं उनको समझ पाएँ। तो अब
हमारा जो DPR इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसको ही रिफॉर्म करना ज़रूरी है। मैंडेटरी इंडिपेंडेंट टेक्निकल ऑडिट्स होने चाहिए। अकाउंटेबिलिटी एनहेंस होनी चाहिए AI बेस्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल्स के थ्रू। ब्लैक लिस्टिंग करो रिपीट ऑफेंडर्स की। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेकर आओ सिविल इंजीनियर्स और रोड कॉन्ट्रैक्टर्स का। पब्लिक प्लेटफॉर्म जो है वो रोड डिफेक्ट्स को रिपोर्ट करने के लिए होने चाहिए और उसके ऊपर फॉलो एक्शन भी जो है वो लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, सीनियर्स राइट टू एविक्ट रिलेटिव्स टू प्रॉपर्टी। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक सूट जो कि फाइल किया गया था एक सीनियर कपल द्वारा कि वो अपने बेटे को अपने घर से निकालना चाहते थे अंडर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। तो यह एक्ट इंश्योर करता है कि सीनियर सिटीजन उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और केयर मिलता रहे उनके बच्चों से। तो एक तरह से उनको ये लीगल राइट देता है ये एक्ट। तो ये सीनियर सिटीज़न एक्ट जो है ये स्ट्रीमलाइन प्रोसेस देता है सीनियर पेरेंट्स को कि वो केस कर सकें अपने बच्चों पर अगर उनके बच्चे उनकी केयर नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, वो मेंटेनेंस सीख कर सकते हैं। तो पेरेंट्स जो उनकी एज 60 या अबव है और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते अपनी अर्निंग्स या प्रॉपर्टी से, तो वो अपने चिल्ड्रन या लीगल हेयर से जो है वो क्लेम सपोर्ट कर सकते हैं इस एक्ट के अंडर। और मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं जो स्पीडी रेजोल्यूशन करते हैं इन केसेस के। तो अब इसमें जो है अगर सीनियर सिटीज़न जो है वो अपनी गिफ्ट प्रॉपर्टी या जो प्रॉपर्टी है वो ये कह सकता है कि मैं सिर्फ तभी इसको ट्रांसफ़र करूँगा अपने जो है चिल्ड्रन या रिलेटिव को अगर वो मुझे बेसिक अमेनिटीज़ और फिजिकल नीड्स देंगे। तो अगर ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है तो ट्रांसफ़र जो है वो फ्रॉड मानी जाएगी। एक सीनियर सिटीज़न जो है उनको मेंटेनेंस फ्रॉम अ प्रॉपर्टी का भी राइट होता है जो कि चाहे बाद में उस लीगल हेयर को या फिर चिल्ड्रन को जो है ट्रांसफ़र हो जाए। और ये राइट ऑफ मेंटेनेंस भी जो है वो अगेंस्ट द न्यू ओनर जो है वो क्लेम किया जा सकता है सीनियर सिटीजन द्वारा। तो अब कुछ डिस्प्यूट्स हुए हैं जिसमें कि डॉटर इन लॉज हैं वो क्लेम करती हैं जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंडर कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रहना चाहती हैं। और चाहे उस केस में ये भी देखा गया है कि जो सन है और डॉटर इन लॉ है वो पेरेंट्स की केयर नहीं कर रहे हैं। तो एविक्शन जो है वो ऑर्डर की जा सकती है अगर ज़रूरत है और सीनियर सिटीजन्स को मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो सेक्शन 23(2) जो है सीनियर सिटीज़न एक्ट का वो पावर देता है कि अगर सीनियर सिटीजन्स की राइट टू रिसीव मेंटेनेंस नहीं हो रही है एक एस्टेट से तो ऑफकोर्स उनको एविक्शन का ऑर्डर देने का सन और डॉटर इन लॉ को हक है। तो एविक्शन ऑर्डर जो है वो ट्रिब्यूनल दे सकता है ऑफकोर्स आफ्टर कंपीटिंग क्लेम्स जो है वो सुनने के बाद। और जुडिशल इंटरप्रिटेशन ये है कि चाहे एक्ट में मेंशन नहीं है लेकिन ट्रिब्यूनल्स के पास ये पावर है कि वो एविक्ट कर सके उन चिल्ड्रन या लीगल हेयर्स को जो कि प्रोटेक्शन ऑफ या वेलबींग ऑफ सीनियर सिटीजन्स नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कई बार ये केस सामने आए हैं और इसके ऊपर जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ऑर्डर दिया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2025। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का रैंक 10th आया है वर्ल्ड में सिग्निफिकेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एज इन 2023। तो ये 2025 की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन रिपोर्ट UNCTAD ने निकाली है और इश्यूज़ जो है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में उसको एड्रेस करने के लिए ये रिपोर्ट निकाली जाती है। 2025 का जो एडिशन है वो पॉलिसी मेकर्स को गाइड कर रहा है कॉम्प्लेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंडस्केप के थ्रू और सपोर्ट करना चाहता है डिज़ाइन करने में साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसीज़। तो इसमें दो दिखाया गया है कि लगभग 100 कंपनीज़ हैं मोस्टली जो US और चाइना की कंपनीज़ हैं वो 40% वर्ल्ड की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रही है रिसर्च और डेवलपमेंट में खासकर AI में। और 118 कंट्रीज़ हैं मोस्टली ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ वो तो बिल्कुल ग्लोबल AI गवर्नेंस डिस्कशन से ही मिसिंग है। रिपोर्ट एस्टिमेट कर रही है कि 40% जो ग्लोबल जॉब्स हैं वो अफेक्ट हो सकती है AI से। इंडिया और चाइना ओनली डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जिन्होंने सिग्निफिकेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की है AI में 2023 में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को एक 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम में कन्वर्ट करके इसका सेकंड फेज़ लॉन्च किया है। तो अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी एक्चुअली 2023 में लॉन्च की गई कि जो विलेजेस हैं अलॉन्ग इंडियाज़ नॉर्दर्न बॉर्डर उनको डेवलप किया जाए और इम्प्रूव की जाए क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर रेजिडेंट्स और बॉर्डर सिक्योरिटी इनहेंस हो सके। लेकिन अब इसको जो है 100% सेंटर फंडेड प्रोग्राम बना के और स्टेट्स को भी इसमें कवर कर लिया गया है। ठीक है, तो लिविंग कंडीशंस और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ इम्प्रूव करना बॉर्डर विलेजेस के पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए स्कीम निकाली गई है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओटावा कन्वेंशन।
ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेटो के कुछ मेंबर्स हैं जो कि विड्रॉ कर रहे हैं ओटावा कन्वेंशन से। ये बेसिकली माइन बैन ट्रीटी है जो प्रोहिबिट करते हैं यूज, स्टॉक पाइलिंग, प्रोडक्शन और ट्रांसफ़र ऑफ एंटी पर्सोनल लैंड माइंस। इसमें स्टेट पार्टीज़ को अपनी स्टॉक पाइल्ड एंटी पर्सोनल लैंड माइंस को विद इन 4 ईयर्स डिस्ट्रॉय करना होता है। ऑफकोर्स कुछ रीन्यूएबल एक्सटेंशन मिल सकती है कुछ टाइम में, लेकिन स्टेट पार्टीज़ को एनुअल रिपोर्ट भी करना होता है अपनी टोटल APL स्टॉक पाइल्स को। तो ये सभी नेशंस के लिए ओपन है। ये माइन बैन ट्रीटी 1999 से ये ओपन है। 164 कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाई किया है और US, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया जैसी कंट्रीज जो हिस्टोरिकल यूज़र्स हैं और पोजेसर्स हैं लैंड माइंस के, उन्होंने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रियाम नेवल बेस। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रियाम नेवल बेस जो है कंबोडिया का, वो अटेंशन गेन कर रहा है बिकॉज ये बैक्ड बाय चाइना है। कंबोडिया के गल्फ ऑफ थाईलैंड कोस्ट पर ये लोकेटेड है। अभी रिसेंटली इसको कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है एक्सपेंडेड रियाम नेवल बेस को, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर चाइनीज़ मिलिट्री प्रेजेंस है और जो है रियाम नेवल बेस एक स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये मलक्का स्ट्रेट के प्रॉक्सिमिटी में है और चाइना इसका यूज़ करते हुए पोटेंशियली एनसर्कल कर सकता है इंडिया को और साउथ चाइना सी पे अपनी पकड़ को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है। सैटेलाइट इमेजरी से यहाँ पर चाइनीज़ वॉरशिप्स भी देखी गई हैं। ठीक है, तो एक ग्लोबल कंसर्न्स रेज कर रहा है ये नेवल बेस। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं द्वारकाधीश टेम्पल। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली 300 पाकिस्तानी सिटीजन जो इंडियन ओरिजिन के हैं वो रिसेंटली विजिट किया है उन्होंने द्वारकाधीश टेम्पल पे। ये टेम्पल द्वारका में लोकेटेड है, ऑफ कोर्स गुजरात में। हिंदू टेम्पल है डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। वन ऑफ द डेस्टिनेशंस है अलॉन्ग द चार धाम पिलग्रिमेज सर्किट। और ओरिजिनल टेम्पल तो ये 200 BC में बनाया गया था वज्रनाभ द्वारा, जो कि ऑफ कोर्स ग्रेट ग्रैंडसन थे लॉर्ड कृष्णा के। तो टेम्पल की 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 72 पिलर्स सपोर्टेड है ये और लाइमस्टोन और स्टैंड से बना है। 16th सेंचुरी चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के इम्प्रिंट्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर। टेम्पल बेसिकली पुष्टि मार्ग टेम्पल है, मतलब यहाँ पर जो टीचिंग्स और रिचुअल्स हैं वल्लभाचार्य के वो फॉलो किए जाते हैं। वन ऑफ द 108 दिव्य देशम है ये, होली अबोर्ड्स ऑफ विष्णु एज पर द अल्वर्स। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यू पंबन ब्रिज। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यू पंबन ब्रिज जो है वो इनॉग्रेट किया गया है PM मोदी द्वारा रिसेंटली। तो ये ब्रिज जो है रामेश्वरम ब्रिज भी इसको कहते हैं। ये रामेश्वरम आइलैंड को मेनलैंड ऑफ इंडिया के साथ कनेक्ट करता है। 1914 में इसको ओपन किया गया था। इसको सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स मिले हैं इसकी फंक्शनैलिटी को एनहेंस करने के लिए। जैसे अभी 2025 में इसको ये इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज बन चुका है। डबल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है ताकि फास्टर ट्रेन ऑपरेशंस हो सकें। और फरवरी 24, 1914 में इसको जो है कमीशन किया गया था कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मेनलैंड और रामेश्वरम आइलैंड के बीच में। तो इसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस भी है। ये ओनली लिंक है बिटवीन रामेश्वरम आइलैंड एंड द मेनलैंड और फैसिलिटेट करता है मूवमेंट को पिलग्रिम्स जो कि ट्रैवल करना चाहते हैं रामेश्वरम टेम्पल में भी। और ड्यूरिंग श्रीलंकन सिविल वॉर ये ब्रिज सर्व किया था इम्पॉर्टेंट राउट फॉर रिफ्यूजीज ऑल्सो, जो कि इंडिया में असाइलम सीख करने के लिए आ रहे थे। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is changing dynamics of India's remittance landscape. This topic is important for your economy section. So according to recently released RBI's remittance survey 2023-2024, advanced economies have overtaken GCC countries as the top source of remittances to India. So this is reflecting a structural shift in India's migration and remittance patterns, raising policy and developmental implications. So traditionally, the GCC countries were dominating the remittance sector, remittances in India, because of large number of low-skilled Indian migrant workers who were working there. But due to COVID, job losses have happened, salary cuts and return migration has happened. Even GCC nationalization policies are also responsible for it, like Saudi Arabia's Nitakat policy, whereby they are preferring local over foreign labor. So therefore, remittances are falling down from GCC countries. Instead, the advanced economies are gaining higher share in our remittances. So US forms the largest share, about 27.7% of total remittances. Why is it happening? Because the better income potential is there in these advanced economies.
High skilled Indian migrants are working in there, which leads to high per capita remittances, which is of course higher as compared to Gulf countries. What is the future here? So of course restrictive immigration reforms are happening in countries like US, which could cause uncertainty, and this uncertainty may push Indian migrants to return or either or remit more instead of investing locally. So this rise in anti-immigration sentiments in Western countries will also uh, force the migrants to diversify their risk by increasing remittances to India. Okay, what is the role of Indian students abroad? So they pay education loans, remit income after graduation. Overqualified graduates, they work in low skill jobs, and they also this also reduces earning potential, and it limits their remittance capacity. So what are the policy recommendations? So we have to align our domestic training with global job requirements. We have to prevent underemployment and ensure dignity of labor. We need to strategize, or we need to enter into strategic migration partnerships with other countries, especially those countries where the migrants from India go. So we also need to encourage productive use of remittances. Okay, and we also need to leverage diaspora networks for economic and knowledge transfers. So the next topic is construction defects in national highways. This topic is important for your economy section. Recently, a woman died and her husband suffered critical injuries after their vehicle crashed on a divider on the newly constructed Delhi Meerut Expressway. So, despite rapid expansion in India's national highway network, serious construction defects continue to undermine road safety. From surface deformities and potholes to bridge collapse, we are witnessing several black spots across the national highway network. So, Ministry of Road and Transport and Highways categorizes these defects under four major heads, like the pavement issues, retaining wall failures, bridge and structural issues, and other construction deformities. So, in recently, two tragic accidents have happened, and both of them have been attributed to faulty road conditions. So, Union Minister Nitin Gadkari also has openly criticized civil engineers and consultants for preparing flawed detailed project reports, calling them primary culprits behind India's high road fatality numbers. In a statement to Rajya Sabha also, he has revealed that many defects were identified through audits by agencies and third-party reviewers. Penalties and corrective actions were taken, but of course, the recurrence of such defects indicates systemic issues. Despite the fact that India's national highway network has grown from 91,000 kilometers about 91,000 kilometers in 2014 to about 1.46 lakh kilometers in 2025, recurrent defects and post-construction liabilities are increasing project costs and delaying the economic benefits. So, what are the structural challenges in implementation? Of course, there is lack of oversight on DPRs, especially outdated or incorrect technical inputs are given. Weak accountability mechanisms are there. Contractors face penalties, but structural corrections take years. Engineers and site supervisors, they often lack a specialized training in modern highway construction norms. What are the recommendations then? So, mandatory independent technical audits should be done of DPRs before project approval. Enhance accountability through AI based project monitoring tools and regular third party evaluations. Blacklist repeat offenders among contractors and consultants. Training programs be done for civil engineers and road contractors to align with international best practices. Public platforms for reporting road defects and follow up action should be there for citizen feedback. So the next topic is seniors' right to evict relatives to property. This topic is important for your social issues. So Supreme Court has recently dismissed a suit filed by an elderly couple or a senior couple uh, who were seeking to evict their son from their home under the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act of 2007, which is also called the Senior Citizens Act. So, this act primarily aims to ensure that senior citizens receive financial support and care from their children, providing a simplified legal route for seeking maintenance. So, Senior Citizens Act basically provides a streamlined process for senior citizens or senior parents, in fact, to file lawsuits seeking maintenance from their children. So, who can claim? Parents who are aged 60 and above
or who are unable to maintain themselves from their own earnings or property, they can claim maintenance from their children or legal heirs who are legally obligated to support their senior parents. So this act also establishes maintenance tribunals for speedy resolution of cases. So a senior citizen may transfer or gift property on the condition that the transferee provides basic amenities and physical needs. If this condition is not fulfilled, then the transfer is considered to have been made through fraud, coercion, or undue influence. If a senior citizen is entitled to maintenance from a property that is later transferred uh, fully or partially to the children or legal relative, the right of maintenance continues against the new owner also. Okay, so disputes are arising involving senior parents, son, and their daughter-in-law, uh, in which we see that daughter-in-laws have appealed to the Supreme Court regarding their right to stay in the shared household. And Supreme Court has held that protection of Women from Domestic Violence Act, women has the right to reside in the shared household, but eviction can be ordered if it is necessary and expedient to protect the senior citizen and ensure their maintenance. Even the Senior Citizen Act has provision that eviction can be ordered if the senior citizen's right to receive maintenance from an estate is being not followed. So eviction orders are given by tribunals, and judiciary has interpreted that although it is not explicitly stated in the act, tribunals do have the power to evict, provided it serves the purpose of protecting the rights and well-being of senior citizens. Okay. So the next topic is Technology and Innovation Report 2025. This topic is important for your science and tech section. India has been ranked 10th in the world with significant private investments in AI in 2023. So this report was released by UNCTAD, and it seeks to address issues in science, technology, and innovation, which are topical and important for developing countries. The 2025 edition of the report aims to guide policymakers through the complex AI landscape and support them in designing science, technology, and innovation policies. So this report shows that just 100 companies, mostly in the US and China, are behind 40% of the world's private investment in research and development. At the same time, 118 countries, mostly from the global south, are missing from global AI governance discussions. The report also estimates that up to 40% of the global global jobs could be affected by AI. India and China are the only developing countries in the world with significant private investments in AI in 2023. So the next topic is Vibrant Villages Program. This topic is important for your governance and your social issues. Union Cabinet has recently approved the Vibrant Villages Program for the period 2024-2029 as a 100% centrally funded scheme. So Vibrant Villages Program is a centrally sponsored initiative, otherwise, which was launched in 2023 for comprehensive development of villages along India's northern borders, and the goal is to improve the quality of life for residents and enhance border security. It also aims to improve living conditions and create livelihood opportunities in border villages. But now, this scheme will be a 100% centrally funded program, and it will cover more states of the northern region. Okay. So the next topic is Ottawa Convention. This topic is important for your international relations. So NATO members have queued up over the past few weeks to withdraw from the Ottawa Convention. So this convention is also referred to as the Mine Ban Treaty because it prohibits the use, stockpiling, production, and transfer of anti-personnel landmines, which are also called APLs. So it requires state parties to destroy their stockpiled APLs within 4 years and eliminate all APL holdings within 10 years. But of course, extension can be given to this time. State parties are also required annually to report their total APL stockpiles. Convention is open to all nations, and it was entered into force in 1999. 164 countries have ratified or acceded to this treaty as of now. So some current and past producers of the users of land mines, all including US, China, India, Pakistan, and Russia, have not signed this treaty. So the next topic is Riam Naval Base. This topic is important for international relations. So Riam Naval Base in Cambodia has gained attention due to expansions backed by China. So this Riam Naval Base is located on Cambodia's Gulf of Thailand coast near Sihanoukville.
So this was recently inaugurated. Basically, the expanded Ream naval base was recently inaugurated by Cambodian Prime Minister, and this is raising concerns about potential Chinese military presence at the base. Ream naval base also holds significant strategic importance due to its proximity to the Malacca Strait, and this base could potentially encircle India and bolster China's naval presence in the South China Sea region. Satellite imagery has also revealed the presence of Chinese warships at the base. Okay. So the next topic is Dwarkadhish Temple. This topic is important for your art and culture section. A group of 300 Pakistani citizens of Indian origin have visited the Dwarkadhish Temple recently. So this temple is located in Dwarka, Gujarat, and it is a Hindu temple dedicated to Lord Krishna. It is one of the destinations along the Char Dham pilgrimage circuit. According to archaeological findings, this temple was originally built in 200 BC at the earliest, and it is believed to have been constructed by Vajranabh, the great grandson of Lord Krishna. So this temple has a five-story building supported by 72 pillars, which are made of limestone and sand. Bearing the imprints of this temple bears the imprints of the 16th century Chalukya style of architecture. This temple is a Pushti Mark temple, which means that it follows the teachings and rituals of Vallabhacharya, the 15th century Hindu saint and philosopher. This temple is one of the 108 Divya Desams also, or the holy abodes of Vishnu, which are glorified by the Alvars, or the 12th century Tamil poet saints. So the next topic is New Pamban Bridge. This topic is important for economy and national relations both. So the New Pamban Bridge has been inaugurated by PM Modi recently. This is also called Rameshwaram Bridge. It connects Rameshwaram Island to the mainland of India, and it was opened in 1914. In recent years, it has undergone significant upgrades to enhance its functionality. In 2025, a new vertical span was added, making the Pamban Bridge India's first vertical lift sea bridge. The upgraded bridge also supports double line electrification, allowing for faster train operations between the mainland and Rameshwaram Island. So the Pamban Bridge was commissioned in February 1914 to improve connectivity between the mainland and Rameshwaram Island. For much of its history, the bridge was the only link between Rameshwaram Island and the mainland, and this bridge has played a pivotal role in facilitating the movement of pilgrims traveling to Rameshwaram Temple, which is a major religious site in Tamil Nadu. During the Sri Lankan Civil War, the bridge also served as an important route for refugees who are seeking asylum in India. Okay, who were seeking asylum in India. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.